तो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी सर। हेलो। मुबशर, मुझे बाबर साहब वाला ग्रुप से किसने रिमूव कर दिया था? क्या? सर जी, मुझे बाबर साहब वाले ग्रुप में से रिमूव कर दिया था रिपोर्ट मार के। किसने किया रिमूव? सर पता नहीं किसने किया। बाबर साहब तो चले गए थे, बाद में पता नहीं किसने रिमूव किया। यार फिर मैं तो नहीं कुछ कर सकता इसमें। सर मेरा पूरा लेक्चर सर जी गुजर गया ऐसे ही। जी बशर, क्या हो रहा है आपका इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कल तक हमने डिस्कस किया था अबाउट appellate jurisdiction, original jurisdiction, and of Supreme Court and judicial review. नोट्स आपको मैंने कुछ सेंड किए हैं, तो इसमें से आज हम कुछ पढ़ेंगे। Origin of judicial reviews and federal US federal courts of appeal, यानी आप कह लें कि लोअर जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में, और ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court, the Supreme Court faced the issue of judicial review for the first time in the case of Marbury versus Madison, which was decided in 1803. The facts of the case were that the Congress had provided in the Judiciary Act of 1789 that a request for the writs of mandamus might originate in the Supreme Court. On the night of March 3, 1801, Marbury had been appointed Justice of Peace for the District of Columbia by President Adams, whose term expired before the commission was delivered. The incoming President Jefferson and his Secretary of State Madison refused to deliver the commission to Marbury, who immediately petitioned to the Supreme Court for the issue of the writ of mandamus under the Judiciary Act of 1789. Chief Justice Marshall, who wrote uh, the judgment, declared that Supreme Court had no authority to issue the writ because the Judiciary Act of 1789 had enlarged the original jurisdiction of the Supreme Court as prescribed by the Constitution, and therefore it was
null and void. The Congress cannot enlarge the original jurisdiction of Supreme Court, which has been described by the Constitution itself. Chief Justice Marshall said that the Constitution is the supreme law of the land and therefore must be paramount to any statute in conflict with it. He based his judgment on the following assumptions. The Constitution is a written document that clearly defines and limits the powers of the government. Number two, the Constitution is fundamental law and superior to ordinary legislative enactment. Number three, an act of legislature contrary to the fundamental law is void and therefore cannot be. The judicial power, together with oath to uphold the Constitution that the judges take, requires that the court so declare when the believe acts of Congress violate the Constitution. After this judgment, the principle of judicial review was firmly embodied in the American Constitution. American system of government. It is now as clearly established as though it had been expressly provided in Constitution. भाई आपको आवाज आ रही है? मुझे एक लड़का बार बार कह रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। यार साहब आवाज आ रही है आप सबको? सर आवाज कट होके आ रही है, बहुत ज्यादा शोर सा हो रहा है। सर बहुत कम आवाज आ रही, हल्की हल्की आवाज आ रही। सही आवाज सही नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है। The origin of the judicial review power of judicial review which was exercised, which is exercised by the Supreme Court, उसका origin क्या है? कल हमने ये पढ़ा था कि उसकी बेस क्या है, तो बेस हमने उसकी फाइंड आउट की थी आर्टिकल 3 and 4 के आर्टिकल 3 and 4 के दोनों को जो सेक्शन 2 है उनके अंदर जो उनकी इम्प्लाइड लैंग्वेज है उसके अंदर इसकी बेस दी गई थी। लेकिन फिर इसका जो फर्स्ट टाइम जो जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वाज एक्सरसाइज्ड इन 1803 इन द केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन। तो ये केस जो था, ये क्या केस था, उसके फैक्ट्स क्या थे? वो ये थे कि the Congress had provided in the Judiciary Act of 1789 that request for the writ of mandamus might originate in the Supreme Court. 1789 के अंदर एक जुडिशरी एक्ट जो है वो बना जिसके अंदर कांग्रेस ने ये ले डाउन किया कि जो रिट ऑफ मैंडामस है ये कैन बी ओरिजिनेट इन सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो एक मार्बरी एक सिटीजन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था एडम्स, और उसकी जो टर्म है वो एक्सपायर हो रही थी, वो यानी आप कह लें कि इलेक्शन कर गया था। उसने जो नया जो प्रेसिडेंट है वो उसके आने से पहले प्रेसिडेंट जो था एडम्स, उसने जो मार्बरी है जिसने ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था उसको एज ए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर दिया, यानी उसको कमीशन दे दिया
اور اس کا جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا اس کے اوپر اس نے اپنے سگنیچر کر دیے اور سیل آف دی اسٹیٹ یعنی مہر بھی لگا دی. بٹ unfortunately he could not deliver the same appointment letter or commission the Marbury. اب پھر یہ ہوا کہ وہ جو اس کا کمیشن تھا یا وہ کہہ لیں کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا دیٹ واز ان پریزیڈنٹ آفس. تو ان دا مین وائل نیا پریزیڈنٹ آ گیا, اس کا نام تھا جیفرسن اور اس کا تھا سیکرٹری آف دی اسٹیٹ, اس کا نام تھا میڈیسن. تو یہ دونوں نے جو ہے ماربری کو جو پچھلے پریزیڈنٹ نے اس کو کمیشن دیا تھا ایز اے جسٹس آف پیس, وہ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر یا کمیشن جو ہے اس کو ڈلیور کرنے سے انکار کر دیا, ریفیوز کر دیا. تو اس وجہ سے جو کیونکہ اس کو گریوینس تھی ماربری کو فرام پریزیڈنٹ and Secretary of State, he approached the Supreme Court of United States of America under the Judiciary Act 1789 and filed a writ of mandamus to requesting the Supreme Court to issue the directions to the President Jefferson and Secretary of State Madison to deliver his commission as Justice of Peace. But the Supreme Court of United States of America was presided by Chief Justice John Marshall at that time, and the John Marshall wrote the judgment, and he declared the Judiciary Act 1789 as null and void on the basis that the original jurisdiction of the Supreme Court is already provided in the Constitution. The Constitution is the supreme law of the land. Any other legislation or supplementary law cannot enlarge the original jurisdiction of the Supreme Court. If the Congress, common sense کی بات ہے, if the Congress wants to enlarge the original jurisdiction of the Supreme Court, Congress must make amendment in the Constitution instead of passing or making new laws to enlarge the original jurisdiction of the Supreme Court, which was already clearly and expressly provided or mentioned in the Constitution of USA. تو یہ ہے جوڈیشل ریویو کا جو ریجن ہے. یہ پہلا کیس آیا تھا 1803 کے اندر, یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے 3 مارچ 1803 کو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا. تو اس کے بعد جوڈیشل ریویو کی پاور جو ہے دیٹ واز ایکسرسائز فریکوینٹلی. تو یہی جو کیس ہے, اسی کیس نے آپ کہہ لیں کہ یہ بیس فراہم کی ہے جوڈیشل ریویو پوری پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ. تو اس کے بعد اس جوڈیشل ریویو کی پاور جو فریکوینٹلی ایکسرسائز کرتی ہے سپریم کورٹ ٹو ڈکلیئر null and void the laws made by the legislature, Congress, the state legislature, orders issued by the state executive, governor, the federal executive, the president, and any treaties made by the United States of America with the foreign countries. ان کو null and void ڈکلیئر کرنے کے لیے on the basis of that these legislations
these laws, these orders, or these treaties are in violation of the constitution. तो इस ये केस जो है इसमें कह लें कि ये फर्स्ट टाइम इस केस के अंदर ये एक्सरसाइज की जुडिशियल रिव्यू की पावर, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रही है. और इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को which is not expressly mentioned in the constitution is and was widely accepted by the federal government, the state legislatures, national legislature, Congress, and other organs of the state. तो किसी ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, एतराज़ नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की या कर रही है वो तो उसके अंदर है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है. बट इन हिस्ट्री वंस एक दफ़ा ये हुआ था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की. तो उसके बाद जो है यूएसए के अंदर सिविल वॉर की एक सिचुएशन पैदा हो गई थी. तो ये तो था ओरिजिन इसका. तो ये जो केस है इसके मैं ना आपको नोट्स भेज दूंगा, आपने इसको केस को अच्छी तरह तैयार करना है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएस फेडरल कोर्ट्स ऑफ अपील्स. ये जो अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया है, अब हम करेंगे लोअर कोर्ट्स जो है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स, there are 13 appellate courts that sit below the Supreme Court, and they are called the U.S. Courts of Appeals. The 94 federal judicial districts are organized into 12 regional circuits, each of which has, आपके पास ये जो है नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, इसमें आप इसको देख सकते हैं जो मैं आपको अभी ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. Each of which has a court of appeals. The appellate court's task is to determine whether or not the law was applied correctly in the trial court. Appeals court consists of 3 judges and do not use jury. A court of appeal here challenges to district court decisions from courts located within its district circuit, as well as appeal from decisions of federal administrative agencies. In addition, the Court of Appeal for the Federal Circuit has nationwide jurisdiction to hear appeals in specialized cases such as those involving patent laws and cases decided by the U.S. Court of International Trade and the U.S. Court of Federal Claims. यूएसए के अंदर the highest court of appeal जो है that is a supreme court, उसके नीचे जो court of appeal है that is called the circuit court of appeal. तो जो circuit court of appeal है ये है 13 है यूएसए के अंदर, यानी 13 circuit court of appellate courts हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे बैठती हैं. तो इनको यूएस कोर्ट्स ऑफ अपील कहा जाता है. तो यूएसए की जो जितनी भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको 94 फेडरल जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद उनके अंदर 12 रीजनल सर्किट्स बनाए गए हैं और हर सर्किट के अंदर एक कोर्ट ऑफ अपील है. और जो कोर्ट ऑफ अपील है इन्होंने इनके पास अपील आती हैं फ्रॉम फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यहाँ पे ट्रायल चलते हैं मुकदमात के फौजदारी जो क्रिमिनल केसेस हैं. तो फेडरल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनके अंदर क्रिमिनल केसेस का ट्रायल होता है और उस ट्रायल में जूरी ट्रायल होता है.
اس جو سرکٹ کورٹ آف اپیل ہے یا اپیلیٹ کورٹ ہے بلو دی سپریم کورٹ، اس کے پاس جب فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اپیلیٹ کورٹ یا سرکٹ کورٹ جو ہے، سرکٹ کورٹ آف اپیل، یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ whether the law was applied correctly in the trial court، یا کہہ لیں کہ whether or not the law was applied correctly in the trial court. Appeals courts consist of 3 judges and do not use a jury. ہر اپیل کورٹ کے اندر 3 ججز ہوتے ہیں اور ان کے اندر جوری نہیں بیٹھتی. یعنی اگر فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے جس میں کسی کے خلاف مقدمہ چلایا گیا فوجداری قانون کے تحت، تو فار ایگزامپل کسی کے خلاف مرڈر ٹرائل ہوا فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ، اس میں کے اندر اگر اس کو سزا دے دی گئی تو وہ اس کو چیلنج اگر کرے گا تو سرکٹ کورٹ آف اپیل میں چیلنج کرے گا. تو سرکٹ کورٹ آف اپیل جو ہے اس جو فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ڈیسیجن ہے، اس کو دیکھے گی اور اس میں سے یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ آیا جو لوور کورٹ ہے فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ، انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر اس جو اکیوز پرسن ہے اس کو سزا دیتے ہوئے کیا کریکٹ لا جو ہے اس کو اپلائی کیا یا نہیں. یعنی کریکٹ لا کے تھرو اس کو سزا دی ہے، یہ تو نہیں اس کو رانگلی پنش کر دیا گیا ہے، بنتا کوئی اس کے خلاف کوئی کسی اور کرائم کا چارج تھا اور چارج کسی اور کرائم کا لگا کے اور ٹرائل کے بعد اس کو پنش تو نہیں کر دیا. یہ ہے سرکٹ کورٹ آف اپیل کی جورسڈکشن کا جو پہلا انسٹنس جو میں نے آپ کو بتایا. سیکنڈ انسٹنس اس کا ہے The appeals court of appeal here challenges to district court decision from courts located within its circuit as well appeals from decisions of federal administrative agencies. یعنی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس کے جو ڈیسیجنز ہیں they are also challenged in the circuit court of appeal and they are telling. اس کے بعد جو ہے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں they are also challenged in court of appeal یا پہلے circuit court of appeal. In addition, the Court of Appeal for the Federal Circuit has nationwide jurisdiction to hear appeals in specialized cases such as those involving patent laws and cases decided by the U.S. Court of International Trade and the U.S. Court of Federal Claims. تو اس کے علاوہ یعنی کہہ لیں کہ جو کورٹ آف اپیلز ہے ان فیڈرل سرکٹ یا کہہ لیں یو ایس اے کے اندر، اس کی جورسڈکشن جو ہے نیشن وائڈ بھی ہوتی ہے. کن کیسز کے اندر اس کی جورسڈکشن نیشن وائڈ ہوگی؟ وہ کیسز ہیں the cases involving patent laws and cases decided by the US Court of International Trade and the US Court of Federal Claims. یہ 3 قسم کے کیسز جو ہیں ان کے خلاف جو کورٹ آف اپیل ہے ان فیڈرل سرکٹس they shall exercise their jurisdiction nationwide. یہ نہیں ہوگا کہ جس سرکٹ کے اندر وہ کورٹ ہے تو اسی کے نیچے جو ڈالتے ہیں انہیں کے فیصلے اس میں چیلنج نہیں ہوتے. وہ میں نے اوپر آپ کو بتا دیا. یہ 3 قسم کے کیسز جو ہیں they can be challenged یا پہلے they can be appealed in any circuit court of appeal in the United States of America. تو وہ کیا ہے ایسے کیسز جن کیسز کے اندر پیٹنٹ لاز انوالو ہوں گے، جیسے یہ کاپی رائٹ کے لاز ہیں یا ٹریڈ مارک وغیرہ اس طرح، یا ایسے فیصلے جو انٹرنیشنل کورٹ آف ٹریڈ کورٹ جو ہے یو ایس کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے خلاف جو اپیل کی جائے گی، وہ فیصلے کے خلاف that can also be entertained in court of appeal or circuit court of appeal nationwide. In any of they can
file an appeal in any circuit court of appeal. उसके लिए ये नहीं है कि आपने जिस एरिया के अंदर वो नीचे अदालत है तो उसके ऊपर वाली पे ही आप नहीं जाएंगे। उसके बाद है नंबर 3 फेडरल कोड ऑफ फेडरल क्लेम। जो फेडरल क्लेम्स की कोर्ट है उसके फैसले भी जो है नेशन वाइड किसी भी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में अपील किए जा सकेंगे। The United States courts of appeal are considered among the most powerful and influential courts in the United States because of their ability to set legal precedent in regions that cover millions of Americans. The United States courts of appeals have strong policy influence on U.S. law. Moreover, because the U.S. Supreme Court chooses to review less than 2% of the more than 7,000 to 8,000 cases filed with it annually, the U.S. Courts of Appeal serve as the final arbiter on most federal cases. The Ninth Circuit, in particular, is very influential, covering 20% of the American population. आप इस चीज़ से ज़रा थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर लोअर कोर्ट्स जो हैं दे आर मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल जजेस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट की फैसलों के खिलाफ अपील लाई करती है हाई कोर्ट में पाकिस्तान और इंडिया में। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यूएसए के अंदर वो लोअर कोर्ट्स के जितने भी फैसले हैं उनके खिलाफ अपील जाती है कोर्ट्स ऑफ अपील में, यानी फेडरल कोर्ट्स ऑफ अपील वो है जिनको सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील भी कहते हैं, उनके पास अपील जाती है। और फिर ये नहीं है कि जी अगर उसका जो फैसला आ गया है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जो एनुअली 7,000 जो फैसले 7,000 टू 8,000 केसेस फाइल होते हैं यूएस के अंदर, उनकी जो अपील जाती है उनमें से सुप्रीम कोर्ट जस्ट 2% अपील जो है उनको सुनती है। बाकी जो अपील है वो फेडरल कोर्ट जो नीचे है कोर्ट ऑफ अपील उसके अंदर ही डिसाइड हो जाती है और दे दैट डिसीजन दैट्स द फाइनलिटी। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाता है, इसीलिए जो कोर्ट्स ऑफ अपील के डिसीजंस हैं दे रिसीव द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो एक लॉ बन जाता है दैट the decisions of courts of appeal in the United States of America and the decisions of Supreme Court that becomes the precedent are lower courts. And the decisions of the Supreme Court and courts of appeal are binding as law on lower courts. So, the U.S. Court of Appeal serve as the final arbiter, यानी कि ये फाइनल इसका डिसीजन होगा कोर्ट ऑफ अपील का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो अपील जाती है एज वी डिस्कस अर्लियर कि उसमें जो हाईएस्ट स्टेट कोर्ट होती है उसके जो फैसले हैं वो जो ये फेडरल कोर्ट्स हैं उनको स्किप करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज ए मैटर ऑफ राइट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके नहीं जा सकते। यू हैव टू फाइल अ रिट ऑफ certiorari to file an appeal in Supreme Court. This is the discretion of the Supreme Court whether or not to submit or admit your appeal in writ of certiorari filed by you. कोई भी आपने अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, आपने रिट ऑफ certiorari फाइल करनी है। You cannot claim that writ as a matter of right. तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, और
اس کی ایز اے ڈسکریشن اگر وہ آپ کی اپیل کو ایڈمٹ کر لے یا نہ کر لے. اسی لیے جو فیڈرل جو کورٹس آف اپیل ہے ان کو بہت ہی زیادہ امپورٹینس حاصل ہے ان دی یو ایس لیگل سسٹم اینڈ پالیسی میں تو اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ جتنے 7,000 to 8,000 کیسز فائل ہوتے ہیں یو ایس اے میں ایک سال کے اندر, سپریم کورٹ ان میں سے صرف 2% کیسز کی اپیل سنتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. باقی 98% کیسز جو ہیں دے آر فائنلائزڈ بائی دی کورٹس آف اپیل. تو ملینز آف جو ہے لوگ کورٹس آف اپیل جو ہے ان کے فیصلے ڈسائڈ کرتی ہے. There are currently 179 judges on U.S. Court of Appeal, authorized by Congress in 28 U.S. courts. اچھا, اس میں جو ججز ہیں 179 ججز ہیں کورٹس آف اپیل میں. These judges are nominated by the president and their appointments are confirmed by the United States Senate. They have lifetime tenure just like the justices of Supreme Court, and they earn annual salary $2,15,400. The Chief Justice of Supreme Court receive annual salary $2,55,000, and justices of Supreme Court, other justices of Supreme Court, they receive salary of $2,44,000 annual, and the justices of Court of Appeal, they receive annual salary of $2,15,400 annual. Federal District Court, the entire territory of USA is divided in 84 districts. Each, when there are more than one judges in a district, each holds court simultaneously, but they do not sit together. A federal district court holds 2 or more sessions each year at various places within the district. It is a court of first instance and uses a jury. Most of the cases which come directly under the federal jurisdiction are tried in a district court. Each district court has a United States Attorney and United States Marshal, which are appointed by President with the approval of Senate. Each district court has a federal commissioner who conducts the preliminary hearing in criminal cases to decide whether the accused should be held for the grand jury. تو فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں ان کے اندر جو ججز بیٹھتے ہیں وہ ہیں ٹوٹل فیڈرل ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر دی گئی ہیں 84 ڈسٹرکٹس کے اندر, اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, اور ہر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ایک جج ہوتا ہے. اگر ایک سے زیادہ ججز ہوں گے تو وہ جب ہیئرنگ کریں گے وہ ایک سے زیادہ جج ایک کورٹ کے اندر نہیں بیٹھے گا, سائملٹینیسلی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. تو کیونکہ یہ فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس کے اندر ایک جج ہوتا ہے, باقی جو سارا کام ہے وہ جوری نے کرنا ہوتا ہے. تو فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے اینولی 2 or more سیشنز کے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر, اور وہ جو ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھے گی, تو مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پہ جوری لگے گی جہاں جا کے یہ فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ اپنی
सिटिंग करेगी या सेशन करेगी। ये इट इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी जो हमने ऊपर पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ अपील, दे आर कोर्ट्स ऑफ अपील, बट दिस इज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। इसके पास किसी किस्म की कोई अपील नहीं आती, इसके पास सिर्फ और सिर्फ आते हैं केसेस डायरेक्ट आते हैं, और इन्होंने जो फैसला करना है उनके खिलाफ अपील्स जाएंगी कोर्ट्स ऑफ अपील में। तो इसके अंदर जो जजेस होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर आल्सो कंफर्म्ड बाय द सेनेट। और उसके बाद इसमें एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल, और उसके बाद एक होता है फेडरल कमिश्नर। तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोर्ट में भेजना चाहती है फॉर ट्रायल, दैट कंप्लीटेड इन्वेस्टिगेशन, आप पहले जिसे इधर पाकिस्तान में जिसको हम चालान कहते हैं, वो जब जाएगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पे जो फेडरल कमिश्नर है उसके पास उसकी प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी। तो हर केस की उस हियरिंग के अंदर फेडरल कमिश्नर ये डिसाइड करेगा whether the accused should be held for grand jury, or it means whether the case made against the accused person is fit for trial or not। तो इसी तरह यूएस यूनाइटेड किंगडम के अंदर यही रोल जो है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस प्ले करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी after completion of investigation against an accused person send the investigation reports to the Crown Prosecution Service. Crown Prosecution Service, after assessing the investigation report, decide whether this investigation report to send to the court or not for trial. Now, whether this investigation this case against the accused person is a fit for trial or not। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है, उसमें अगर पुलिस किसी मुलजम को गुनाहगार कर देती है तो वो पुलिस जो है उसका चालान बना के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास भेज देती है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पूरी जो चालान जो है जो 173 CRPC के तहत भेजा जाता है, उसको कहते हैं रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, और उसको चालान भी कहते हैं। तो वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसको असेस करेगा कि क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसकी बेस पे इस बंदे को ट्रायल के बाद सजा हो सकती है। अगर वो ऐसा समझते हैं they shall send the same challan to the court for trial। तो ये है। तो यूएसए के अंदर जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान वाला और यूके वाली क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का रोल जो है फेडरल कमिश्नर प्ले करता है इन यूएसए। तो अभी 1 मिनट रह गया इसको खत्म होने में, और इसके बाद ये क्लास दोबारा रिज्यूम होगी। जो बच्चे दोबारा आएंगे उनकी अटेंडेंस होगी, जो नहीं आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। ये आपने ना मजाक में समझना इस चीज। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स। These have been established by Congress under some specific grant of legislative power conferred in Article 2 of the Constitution. These courts do not have the power to appoint or fix the law or budget or to guarantee against reduction of their salary। तो लेजिस्लेटिव कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स जो है ये इस्टेब्लिश की जाती हैं कांग्रेस एक्ट